What does one understand of divine vision? Something magical, something that we can't understand, something impossible, something that has just been stated because this is a story, it's not real. It's somebody's imagination. Or is it real? Is it possible? Is it scientific? Can it scientifically be understood? The possibility of it. Just sharing my thought on this. We all exist in space, in a space which is part of our mind. We exist in our mind. We occupy a space in our mind. The mind which is restricted to the physical body in which we exist. When we go deep within ourselves, as we say in meditation, we are no longer restricted by the individual mind. We are free to roam around in a much wider space. The space of our existence expands. Space of our existence expands. The mind does not go outside the physical body. We usually understand it to mean that the mind is expanding, and because of the expansion of the mind, we are getting knowledge of the universe. The universal consciousness is being downloaded in the mind. So we are getting intuitions in relation to the happenings in and around us, in and around the world, depending on how much we have been able to download, how much we have been able to expand our mind, how much we have been able to expand the space in which we exist. Our space has expanded. That is the understanding, I think, that we all have. The way I see it, your mind is not expanding. Your mind is not going beyond your physical body. Your mind was existing in the physical body and it is still existing in the physical body. The individual mind is a part or a particle, a very, 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 very small part of the universal mind. Agreed. Just like mind is a small part of the universal mind, the ego is a small part of the universal ego. The universal ego is what we call Brahm. And the individual ego is what we call Aham. So the divine vision that we are talking of, or the knowledge of what is happening at a particular space, in a particular time,
In fact, even in the minds of the people involved, not just seeing the actions of their bodies, possibility of entering, hearing the voice of the warriors, of the mind, the voice of the mind of the warriors. So this divine vision is obtained or is got when the ego reduces to just a point. The ego is not I, it's not the big I, it's not the small I. The ego is the point on top of the small I. You can see it. We feel that the small becomes big. Small becomes big. How does the big become small? We used to play this, ask this question in our childhood. How do you make a line smaller without cutting or rubbing it? So you draw a bigger line next to it and it becomes a smaller line in comparison to the bigger line. How does the big I become the small I? When the self, that point, sees the ego as separate from it. The self or me is not the ego. We were on the topic of divine vision. So when that ego is reduced to just a mere point, it sees the entire universe in its own mind. There is no downloading from outside. There is no need for any downloading from outside. Whatever, whoever is connected with the self, with me, I can see what is happening there with them. I don't know if I've been able to make myself very clear. Basic point being that this divine vision, do not take it to be unreal or a story or a make-believe. It's very real, which can be experienced by all of us. We can get this divine vision. We can get to know, get to see what is happening somewhere else. We can get to understand and hear the voice of a person in front of me or a person away from me also. Each and every human has the capacity, has this power, has this ability. We don't make use of it. We are not being able to make use of it because we do not believe in it. Because we do not believe in it. Sanjay was endowed by Sage Vyas by what we call divine vision. So he could see what is going on in the battlefield, and not only see the ideas forming in the minds of the warriors also, he could hear, he could see them too.
The battle started on the battlefield of Kurukshetra at the appointed hour. Sanjay stayed in the battlefield for 10 days. When Bhishma, being badly wounded with the arrows, fell off the chariot, Sanjay conveyed the message to Dhritarashtra, who at that time was present in Hastinapur. Hearing this news, Dhritarashtra was filled with sorrow and started weeping. Then he asked Sanjay to narrate to him all the details of the war. Up to the 24th chapter of the Bhishma Parv, yani section, Sanjay narrated the incidents of the war. In the beginning of the 25th chapter, Dhritarashtra asks Sanjay. It's the very first chapter, now first verse. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. We had an introduction today. Let's start with the first chapter tomorrow. First of the first chapter. Like I said, we are all students. We are all in the same boat, so as to say we are all in the same classroom. So to make this endeavor successful, beneficial to all of us, I would request you all to be interactive. Any doubts, any questions? I am not conducting this with a fixed syllabus or a fixed with any fixed matter. I have nothing with me. It's all coming impromptu. I do not have any notes also. So this journey of ours, we are all part of the same or in the same compartment. We are all moving together. Based on that, let us all together understand, imbibe, and live the Gita. नारायण 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 नारायण. संजय को जब दिव्य दृष्टि मिली थी तो उसे युद्ध मैदान में जाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो धृतराष्ट्र के पास रह करके भी सब देख सुन और वर्णन कर सकता था. युद्ध मैदान में क्यों गए तो मामी जी अपने को महाभारत में देखना पड़ेगा. उन्होंने मैंने देखने के लिए युद्ध मैदान को देखने के लिए नहीं गए, देखने के लिए उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी. नहीं, हाँ, पर युद्ध में गए क्यों ये अपने को मैंने महाभारत में देखना पड़ेगा. आज के जमाने में तो विज्ञान ने ये दिव्य दृष्टि साधारण आदमियों को हम सबको दे दी है. हम सबके हाथ में ये मोबाइल के द्वारा दे दी है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और बिल्कुल सही बात है. जिसने इसका आविष्कार किया हो सकता है उसको उसकी दिव्य दृष्टि रही हो, लेकिन हमारे लिए तो सुलभ हो गया बिना किसी परिश्रम के. बहुत ही सुंदर बात है. यहाँ पे दिव्य दृष्टि की जो बात आ रही है मामी जी, अपने जितने भी आविष्कार हैं वो सब भगवान के कारण, भगवान की मर्जी से ही, भगवान की शक्ति से ही है. हाँ, वास्तव में तो ठीक ही बात है कि आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है लाइव देख सकते हैं, तो दिव्य दृष्टि तो हो गई कि नहीं. कहीं पे भी हम कुछ हो रहा है तो दिव्य दृष्टि से यही तो बताया जा रहा है कि हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है संजय वो देख पा रहे हैं. तो आज के समय में तो ये असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है. नहीं है. हाँ,
आज हम लाइव टेलीकास्ट, पूरे संसार का लाइव टेलीकास्ट सब जगह देखते हैं। इस यानी लोगों कारण को से विश्वास जो करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था, लोग विश्वास बिल्कुल करेंगे कि ऐसा हुआ था। बिल्कुल, तो ऐसा होना संभव है, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। पर दिव्य हाँ दृष्टि में एक और जो बात जो मिली अपने को, कि केवल युद्ध भूमि में क्या क्रियाएं हो रही है, केवल वो नहीं देख पा रहा है। वो तो आज के दिन हम अपने कैमरा के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम देख सकते हैं, परंतु सैनिकों के, वॉरियर के मन में जो बात आ रही है उसका ज्ञान उसको होता है। ये हमारी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है। तो जो हो दिव्यता सकता है। है वहां पे वो हम्म, इस बात की है, खास बात हम्म, यहाँ पे वो है। हो सकता वो है आज के फ्यूचर दिन, में इसकी भी मशीन बन जाए। हाँ जी, हो सकता है फ्यूचर में इसकी भी मशीन बन जाए। होने को हो सकता है। आज के हम्म, दिन ये शक्ति जो है लोगों में रहती है। आज ऐसी विद्याएं हैं हाँ जिसको सीख कर, जिसके द्वारा आप दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। हम्म, इन विद्याओं का दुरुपयोग करके आप दूसरे को अपने वश में भी कर सकते हैं हाँ हाँ और उसको पता भी नहीं चलेगा। हम्म, तो जो भी शक्ति होती है, हर शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। हम्म, वो अपने ऊपर निर्भर करता है हम क्या करें। पर ये दिव्य दृष्टि की जो आपने बात कही बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन दिव्य दृष्टि संभव है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। हम्म, आज जहाँ पे हम दिव्यता की तरफ देखेंगे तो किसमें दिव्यता नहीं है। आज हमारी शरीर की सब क्रियाएं हो रही हैं, बिना दिव्य शक्ति के हो रही हैं क्या? हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खून का संचालन हो रहा है, हृदय का धड़कन हो रहा है, मुंह से वाणी निकल रही है। बिना दिव्य शक्ति के क्या कुछ भी संभव है? नहीं, दिव्यता तो है, हम उसके प्रति सजग नहीं है। बिल्कुल उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। हम्म, हम, खास बात हमारी जो भूल होती है, हम दिव्य शक्ति को तो मानते हैं, हम्म, उस दिव्यता को हम एक शक्ति रूप में मानते हैं, हम्म, उसको हम साकार रूप में नहीं मान रहे हैं। ये हमारी खास भूल हो रही है, ये हमारी खास भूल हो रही है। माँ के दूध को तो मान रहे हैं पर माँ को नहीं मान रहे। हम्म, दूध तो पी रहे हैं हाँ पर माँ है ये नहीं मानने में आ रही है। और माँ को मान भी ले तो पिता तो बिल्कुल नहीं मानने में आ रहे हैं। प्रकृति हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम्म, धरती को नहीं मानना संभव नहीं है। धरती की सत्ता हम मान रहे हैं हम्म, पर धरती को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, प्रकृति को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, हाँ नेचर हाँ को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हाँ हाँ प्रकृति नहीं है, नेचर नहीं है, अर्थ नहीं हाँ है, विंड नहीं है, एयर नहीं है, सन नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। हाँ 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 तो नेचर तो है पर नेचर गॉड नहीं है। हम्म, हमारे शास्त्र भी नहीं बोल रहे हैं कि नेचर गॉड है। हम्म, नेचर गॉड की शक्ति है, नेचर गॉड शक्ति, की एनर्जी है। हम्म, नेचर के रूप में भगवान ने, गॉड ने अपने को मैनिफेस्ट किया है। हाँ हाँ तो भगवान का अवतरण, जो प्रकृति या संसार जिसको हम बोल रहे हैं, वो हम्म, भगवान का अवतरण है, भगवान का हम्म, मैनिफेस्टेशन है, भगवान का प्रतिबिंब है, भगवान का रिफ्लेक्शन है। हम्म, तो जो मैनिफेस्ट हो रहा है, हम्म, उसे नहीं क्या समझ उसकी रहे हैं, सत्ता, हाँ, उसे नहीं समझ रहे हैं। उसे नहीं समझ रहे हैं, उसकी हाँ सत्ता को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। हाँ हम मैनिफेस्टेशन को तो रियल मान ही रहे हैं, हाँ मैनिफेस्टेशन को हम अनरियल नहीं मान सकते। हाँ तो वहां पे रिफ्लेक्शन को हम रियल मान रहे हैं, जबकि वास्तव हाँ में
वो रिफ्लेक्शन है, वो रियल नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो बनने और बिगड़ने वाला है, वो प्रकट और अप्रकट होने वाला है। ये सब ये ईश्वर की हमारी, लीला है। हाँ महाभारत का युद्ध भी तो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। मामी जी, ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता। अभी कल अपने और चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन का जो प्रयोजन की बात है, वो समझने की आवश्यकता है हमें। भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? जब ये वापस प्रतिबिंब है, जब ये प्रतिबिंब है, जब ये सत्य नहीं है, तो भगवान ने किसी असत चीज की का निर्माण नहीं किया है। अपनी इच्छा से भगवान ने ये नहीं बनाया। छोटा बच्चा माँ बाप से जिद करता है, तो माँ बाप उस जिद को पूरी करने के लिए उसको खिलौना बना के दे देते मिट्टी का। तो ये संसार जो है वो भगवान के द्वारा अपने बच्चों के लिए, जिद्दी बच्चों के लिए, जो उनसे विमुख हो गए, जो खेलना चाहते थे, उनके लिए बनाया हुआ खेल का मैदान है। इसका मतलब ग्रोन अप हो जाने के बाद में ये खिलौने छोड़ के उस तक पहुंचने की ही चेष्टा करनी है। जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं, जब तक हम ये समझ जाते हैं कि हमें ग्रो अप करना है, तब हम इसे छोड़ के अपने ग्रोन अप होने का इंतजार कर रहे हैं। पूरा ग्रो अप हम हो जाए, उसके लिए साधना कर रहे हैं। पर जब हम ग्रो अप हो जाते हैं, ग्रो अप होने के बाद हम संसार को छोड़ते नहीं है। ग्रो अप होने के बाद हमारा उद्देश्य क्या होगा कि भगवान के जितने भी बच्चे संसार में हैं, सबके सबको घर ले चलो। ये हमारा प्रयोजन है, ये हमारा उद्देश्य है। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सबके सब भगवान के बच्चे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब भगवान के उपजाए हुए हैं। तो उन सबको भगवान के दरबार ले जाना है, वापस भगवान के घर वापस ले जाना है। ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, ये भगवान की आवश्यकता है। बोलिए, कोई बात आ रही है मन में? ये सब बातें रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, वो जो युद्ध जो करने वाले हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। वहां पे क्या हो रहा है, अगर आप बीज को ठीक कर लेंगे, अगर आप जड़ को ठीक कर लेंगे, तो सारे फल और पूरा का पूरा वृक्ष ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा। हमें वृक्ष के ऊपर चढ़ के एक एक पत्ते को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक डाल की रिपेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। तो हमारा बीज, हमारी जड़ कहाँ है? हम अभी जहां हैं वहां पे। दिस इज द बेसिक टीचिंग ऑफ द गीता। You do not need to change where you are. You do not need to change what you are doing. कृष्ण भगवान की बांसुरी बज गई। आप जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, आपको केवल वही और वहां वैसे ही करना है। अगर आपसे कुछ और भगवान को कराना है, तो आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आपको अपनी परिस्थिति बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है। You do not need to do anything to change your circumstance. ईगोलेस तो होना पड़ेगा। जहां आप सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ईगोलेस हो जाएंगे। ईगो एंड सेल्फ में कल की जो मैंने बाबूजी के साथ चर्चा भेजी थी, उसको सुनिएगा। फिर इसकी चर्चा अभी विषयांतर हो जाएगा, गीता जी पढ़ेंगे तो इसकी बहुत चर्चा होगी। अभी इंट्रोडक्शन में अभी इतने इसमें और डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, नारायण 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 नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, गौ माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण 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 नारायण।